Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am Ranga Bashiyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले STD कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगा बाश्यम। Thank you, Sonu. The top stories. Prime Minister Narendra Modi announces the change of name of Shipping Ministry to Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Demonetization has helped reduce black money, says PM. And government has procured nearly 250 lakh metric tons of paddy in the current kharif season. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करने की घोषणा की। नोटबंदी काला धन कम करने में सहायक रही है, कहा प्रधानमंत्री ने। और सरकार द्वारा मौजूदा खरीफ मौसम में लगभग 250 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद कर ली गई है। And of all the details, government is changing the name of Ministry of Shipping, and it will be now known as Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Prime Minister Narendra Modi announced today while virtually inaugurating the RoPax terminal service between Hazira and Gogha in Gujarat. Mr. Modi has said that to reduce the expenditure on logistics, India is fast developing multimodal connectivity. He said that we are trying to interconnect the infrastructure related to road, rail, air and shipping, and removing the silos in this process. He said that we are still spending more money on transportation in comparison to other nations. We can reduce the cost of logistics through water transport. Dhirendra, just a quick comment on this particular aspect. Logistics has been a key focus area of the government, whether we talk of roads, rails, air connectivity or shipping. And now this effort at looking at them holistically will really do good for the sector, isn't it? Yes, many a times, government machinery of different kind, they become impediments. So, this kind of coordination might be helpful. But this government has been, has been very focused. If you look at some of the great successes despite, this COVID, which has been a big spanner. Yeah. If you look at the UDAN scheme, small cities connected by air. Yeah. Also, this waterways, I think, it has already, what this government started between Patna and West Bengal, Kolkata, now we have a connection through waterways. I don't know. Different machinery is being coordinated. You eliminate the need to coordinate. इस बीच हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर मुश्ताक जुड़ गए हैं कोलकाता से। मुश्ताक जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल सर। लाइन मत काटिए, कोलकाता में नहीं पकड़ रहा है ना 100.1 गोल्ड में। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो गोल्ड के प्राइस से रिलेटेड है
और उसको खरीदने से वो गोल्ड के जैसा फायदा हो सकता है। लाइन मत काटिए, ये इसी में बोलिए सर। ठीक है। ढेर सारे गोल्ड फंड है और ये गोल्ड फंड को खरीदने से इनका दाम उतना ही बढ़ता है या घटता है जितना सोने का दाम बढ़ता है या घटता है। और ये अलग अलग डिनोमिनेशन में आते हैं, तो 10 ग्राम या 20 ग्राम, 10 ग्राम या 1 ग्राम के यूनिट्स में ये अवेलेबल है। और अगर मुझे कुछ गुना, और ये दो फॉर्मेट में आता है, एक गोल्ड फंड है और एक गोल्ड ईटीएफ है। गोल्ड ईटीएफ किसी आम आदमी के लिए खरीदना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको स्टॉक ब्रोकर पे शेयर की तरह आप ईटीएफ खरीदते हैं। गोल्ड फंड में लगाते हैं, ये 1/4% दूसरे ईटीएफ से महंगा होता है, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं और ये काफी आसान है खरीदना। आदित्य बिरला सन लाइफ का गोल्ड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड सेविंग्स फंड, ये कुछ विकल्प है। सबसे बड़ा जो फंड है वो निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड, और इनका अंडरलाइंग ईटीएफ भी सबसे बड़ा है। तो ये कुछ विकल्प है और इनका दाम उतना ही बढ़ता है या घटता है जितना सोने का खर्चा काट करके। अच्छा, उसमें लॉकिंग पीरियड होता है क्या? नहीं सर। नहीं, ये गोल्ड में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड में किसी में लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। एक एग्जिट लोड होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनियां चाहती नहीं है कि लोग पैसा लगाने के साथ तुरंत निकालने के लिए तैयार हो, तो उस वजह से एक एग्जिट लोड होता है। लेकिन अधिकतर गोल्ड फंड में किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। Right. And Dhiren, just for the benefit of our listeners, out of the two, since you compared them, a plain gold fund and also a gold ETF fund, which one is better? Gold ETF is better because, the gold fund is investing in, gold fund invests in gold ETF. Gold funds are simply a vehicle to be investing in gold ETF because buying a gold ETF requires going to a stockbroker, having a demat account, buying like a stock, which requires certain skills and effort. Whereas, for individual investors buying a mutual fund the way it is, so gold fund is little expensive, but, is a simpler way of buying gold fund. Right. Fine. Let's go across to Mumbai where we have Rohan joining us on the show. Good evening and welcome to Market Mantra. Yes, sir. Good evening. Yeah, go ahead. Put your question. Okay. Sir, my question is that when I visit the website of Value Research, I am unable to understand their options. Although they are good, but fortunately I don't know what kind of information is there regarding mutual fund, and also can Mr. Dhirendra explain this? And my second question is what is his opinion about the new kind of diversification in the mutual fund and all that, regarding which SEBI has imposed a restriction like 25% into this fund and 25% into that fund. What is his opinion? Thank you. Okay. Value Research Online is a very big website which has all the information on each company in India for stock investors, on each mutual fund in the country. So if you look at the, on the top right hand side, there is a search bar, there is a magnifying glass. If you click on that and type the name of any company or any fund, you get the finest and most comprehensive information on any company and any mutual fund. That is one. Now, how this stock could be useful? There are particularly two tools which could be useful for investors. One is in the fund section, you would have seen that there is a fund selector. That will help you compare any fund. If you go at the bottom of the page, you have listing of different categories. You click on that and you are good to compare any fund. So if you are looking at large and mid-cap fund or multi-cap fund, look for that category and do your comparison based on performance and other parameters of portfolio. So I think, I end up using my website far more intensely, and it is able to fulfill my needs to compare mutual funds. Likewise, for stocks, you have a stock selector which helps you filter stocks based on your criteria of choice. Right. दूसरा इनका क्वेश्चन था डाइवर्सिफिकेशन को लेकर कि सेबी का कोई रूलिंग आई है कि कुछ मिनिमम परसेंटेज स्मॉल कैप, मिड कैप इन कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करना जरूरी है, उसके बारे में पूछ रहे थे। हाँ जी हाँ, एक सेबी का रूलिंग आया था जिसमें कहा गया था कि मल्टी कैप फंड को कम से कम 25% स्मॉल कैप में और मिड कैप में लगाना होगा। और उस रूलिंग को परसों एक और रूलिंग आया कि एक नया कैटेगरी भी सेबी ने परमिट कर दिया है जिसको कि फ्लेक्सी कैप कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि जिन जिन फंड को कठिनाई हो रही थी वो फंड उस तरह से जैसा कहा गया वैसे चलाने में
वो सब अपना स्वरूप बदल करके मल्टी कैप फंड्स हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक बदलाव हुआ था जिससे कंप्लाई करने में अधिकतर फंड कंपनियां सक्षम नहीं थी, या लग रहा था कि उन्हें दिक्कत होगी या निवेशकों का भी नुकसान हो सकता था। तो वो सेबी ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। अब चलते हैं अगले कॉलर की ओर। चेन्नई से विजय है हमारे साथ। विजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए। Yeah, good evening, Mr. Dhirendra. I just now listened to you explaining briefly in Hindi about the Flexi Fund. That was what I was about to ask you. Yeah. SEBI has been constantly, almost every week they have been making some amendments or announcements. They started with the timing, then they reversed the timing, and the latest one is the Flexi Fund. And obviously, I think AMCs or the companies may rechristen their multi-cap fund or float new Flexi Fund. What is your perception of the market in the next couple of months or weeks? Thank you. Yeah, I think, you mentioned about two changes brought by SEBI. One was purely a logistic thing. Because of COVID-19, the timings were tightened, or, the timing was reduced because the cutoff timing, if they have remained the same, it would have been difficult for fund companies to do the banking transaction. So in all fairness, to make sure that the transaction loop happens well within the time so that the fund company is in readiness to deploy that money, it was done with that in mind. So that was a COVID response by the regulator. Multi-cap also, I think that change was in a hurry. And my outlook of the market, very difficult. And I am generally wrong whenever I am trying to get you outlook of the market. So धीरेन्द्र जी ऑलरेडी नियर ऑल टाइम हाईज है, 1% ही दूर है। जी हाँ, ये बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है कि हमें पता है कि बाजार की स्थिति या कंपनियों की आमदनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन उनका कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस अपने शिखर पे है, तो बाजार के बारे में गेस करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से मुझे लगता है कि लेकिन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए और मुझे लगता है अगर ये बेहतर होता है तो हम दोबारा वापस, और बाकी स्थिति काफी सुधरी है, ब्याज दरें कम है, तो अचानक बाजार को लगेगा कि बाजार शायद अट्रैक्टिव है। तो अभी तक लोग चिंता में भाग रहे थे बाजार, शायद निवेशकों को नहीं भागना चाहिए क्योंकि अधिकतर समय हम गलत होते हैं। Fine. Let's move on and take our next caller. We have Aditya joining us from Thane. Good evening and welcome to the program. Hello. Yes, Aditya, go ahead. First of all, I was not following the stock markets because of the reasons of education. So I wanted to know that what is the current situation and what had happened last 3-4 weeks in the stock market and sectors. And do you think the electing of Joe Biden will affect the overall stock market? So please don't cut the... Yeah. Let's take the second question first, Dhirendra. Yeah, there could be some impact in terms of regulatory changes or attitude of the government towards various policies which can have an impact on business. But in terms of trying to find out the precise connection between the two, it's very hard. That what will Mr. Biden do and what Mr. Trump did? Will there be a reversal of many of the things? Still, I feel that to get the stock market based on these changes is nearly impossible, and you will keep getting surprised. In fact, based on the predictability of many of the changes, it is extremely difficult to guess the market simply because the market can behave very differently, as we have seen time and again. So it's not worthwhile. I don't have a view on that. And last 3-4 months, what has happened to the market? Market has gone up. Last 4 months, it has recovered most of the losses. It is back to its all-time high. If you look at, Sensex, what has happened in the last 3 months, it is up about 12%. Mid-caps are also up about 10%. But the small-cap index is up 14%. And so that is quite interesting. If you look at, what has happened, what was completely, if you look at the dogs of the Sensex, which was the banking stock, they are up 26%. So I'm giving you the broad dissection of the various segments of the market, and things look very different and things have been very bright. The market has surprisingly gone up in a very impressive way.
despite all the kind of grim outlook that investors had. हमारे अगले कॉलर है दिल्ली से इंद्रजीत। उनसे बात करने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। इंद्रजीत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैं कुछ फंड होल्ड कर रहा हूँ, इनके बारे में धीरेन्द्र जी की राय जानना चाह रहा था। जी फंड है L&T इमर्जिंग बिजनेस, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनी। तो इनका होल्ड करना चाहिए, मैं काफी टाइम से रखे हैं ये फंड। जी हाँ, ये चारों फंड अच्छे हैं और हाल फिलहाल फ्रैंकलिन के फंड का, इक्विटी फंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पर मुझे लगता है कि उसका प्रमुख कारण ये रहा है कि बहुत सारे निवेशक, फ्रैंकलिन के डेट फंड में जो कुछ हुआ उसका असर उनके इक्विटी फंड पे भी दिखा है। बहुत सारे निवेशकों ने पैसा निकाला है। लेकिन केवल उसी के आधार पर अपना पैसा मत निकालिए। और फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड में इस फंड का प्रदर्शन उतना बुरा नहीं है। फोकस की इक्विटी, जो कि काफी बड़ा और पॉपुलर फंड था और जिसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, उसकी बदहाली ज्यादा हुई। तो मुझे लगता है कि अगर आप लंबे समय के लिए ये पैसा लगा हुआ है तो इस पैसे को ना निकालें। Yeah, we have Sai Kiran joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening. Yeah. I would like to ask a question. Yeah. So I am new to investing. How do I invest? How do I start the investment process? Like, do I copy a expert investor or do I invest in standard companies? I wouldn't mind taking some risk. You are referring to investing in stock only? Yes. Okay. Yes, I would say that don't copy an expert, because the expert can have a different outlook, different risk tolerance, different scale of money. And think of an investor who has 100 crore and he loses 10 crores. He'll be okay. And while you are copying it, you will actually have great difficulty tolerating that kind of thing on a 50 lakh rupee corpus. A 10% loss could be very meaningful. So I would say that what works you will have investing in stocks. Make sure that you have the time and inclination. Identify your stocks. There are a lot of advisory which provides you opinion about different stocks. Maybe that could be a good starting point, because initially I think, and if you have the ground rule that you will always be diversified, you will make sure that you are diversified at all times. You will make sure that you have at least a minimum of 10 stocks of different kinds, and you are not speculating, and you are always guided by the fundamentals. What happens typically is that you lose the sight because of the market opens every day. So we are so much guided by the outlook simply because of the price movement. But the fact is that, if companies are able to grow and make more money based on the same capital, they tend to do well. And in the short run, the market moves erratically. We don't know what's going on. And sometimes it could be very unnerving. In the month of March, the best companies in the country also declined by the same percentage as the not so good companies. So that could be quite unnerving. 30% decline in a week's time. But most of those companies with strong fundamentals recovered. So look for companies where we think companies will do well over a period of time. Simple businesses which you understand, which you can decode, and make sure that you're spending time and owning the decision of investing in the company which will contribute to your financial well-being. I think is a great idea. We have Santosh joining us from Basti, but before we take his call, let's take a look at some of the other news items. Prime Minister Narendra Modi has said that demonetization has helped reduce black money, increased tax compliance and formalization, and given a boost to transparency.
In a tweet, Mr. Modi said these outcomes have been greatly beneficial towards national progress. On this day, 4 years ago in 2016, the Prime Minister addressing the nation had announced about demonetization to break the grip of corruption and black money. Mr. Modi had said that the step will strengthen the hands of the common man in the fight against corruption, black money and fake currency. And we have Santosh joining us. Good evening and welcome to Market Mantra. Hello. Yes, go ahead. Put your question. जी नमस्कार सर. नमस्कार. अपना सवाल पूछिए. हाँ जी, मुझे ये जानना है कि जैसे कि हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है जिस ब्रोकर के पास जी, अगर कभी वो ब्रोकर को कुछ ये हो जाए, कुछ बैन हो जाए या उसके कुछ कोई डिफॉल्ट हो जाए ब्रोकर जी, और ब्रोकर का सर्विसेज बंद हो जाए, तो हमारे जो होल्डिंग्स उनके यहाँ पड़े रहेंगे शेयर जी, उसके बाद उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो भी कभी डिफॉल्ट हो जाते हैं ब्रोकर. जी हाँ, आपका पैसा फंस सकता है, लेकिन सेबी इसके बारे में कुछ कार्रवाई कर रही है कि आपका ब्रोकर अगर दिवालिया हो जाता है तो आपके पैसे को कैसे बचाया जा सकता है. और खासकर जिस तरह का ऑनलाइन ब्रोकिंग में आप जिस तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी देते थे, जिसमें कि कई बार तो पिछला जो फ्रॉड हुआ है, और मुझे लगता है कुछ और फ्रॉड ऐसा निकलने वाला है जिसमें कि आपका पैसा जो कि डीमैट अकाउंट में है वो ब्रोकर ने बेच दिया था, क्योंकि ये इनेबल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है जब ये शेयर जो आपके डीमैट अकाउंट में है वो मार्जिन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रोकर द्वारा, या जब आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो उससे बचाने के लिए सेबी ने कुछ इंतजाम किया है. अगर कोई निवेशक है जो कि केवल खरीदता है और होल्ड करता है और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता है और अपने शेयर्स में स्पेकुलेट नहीं करता है या फिर मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करता है, तो आपको देखना चाहिए कि आप उस ब्रोकर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करिए ही मत. कुछ ब्रोकर हैं जो कि आपको केवल उनको डीमैट अकाउंट का एक्सेस केवल आपके क्रेडिट या डेबिट जो कि आप ऑथराइज करते हैं केवल उसका ही है, और उनका अख्तियार आपके डीमैट अकाउंट पे नहीं होता है. उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर पाना आज संभव हो पाया. अब एक खबर ले लेते हैं कृषि क्षेत्र से. सरकार खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर लगातार खरीद कर रही है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कल तक 248,99,000 टन मेट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है. पिछले साल के मुकाबले इसमें अभी तक 19.92% की वृद्धि हुई है. कुल खरीद में पंजाब का योगदान 175,24,000 मेट्रिक टन है. ये हिस्सेदारी 70.37% है. तकरीबन 21,09,000 किसानों को 47,010 करोड़ 10 लाख रुपयों का भुगतान किया गया है. और अब दिल्ली से अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं. अंकुर जी नमस्कार, सवाल पूछिए. हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने 3 साल पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में 3.5 लाख रुपए लगाए थे सर, और अभी एचडीएफसी के बैलेंस एडवांस में सर. बैलेंस एडवांस, हाँ जी. और सर ये अभी उसको नेगेटिव में उसकी ग्रोथ जा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? जी हाँ, एचडीएफसी के बहुत सारे इक्विटी फंड और ये बैलेंस फंड का प्रदर्शन बहुत खराब है, और मुझे शुरू में लग रहा था कि 2-3 साल खराब भी है, लेकिन उस फंड मैनेजर का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड इतना जबरदस्त था कि लग रहा था कि सुधार होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पानी सर से ऊपर जा चुका है. अब हमें उनके साथ और ज्यादा पैसा अपना इक्विटी का या बैलेंस फंड का नहीं रखना चाहिए. Right. We have Rahul joining us next from Noida in Uttar Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening. Yeah. So मेरा एक क्वेश्चन है. Yes. कि लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अभी जो जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो कंपनीज पीएफ में हमारे लिए पैसा डालती है, तो क्या ये राइट स्ट्रेटजी होगी कि हम पीएफ के पैसे को एनपीएस में ट्रांसफर करके वहाँ पे ज्यादा मुनाफा कमा सके, क्योंकि एनपीएस का प्रदर्शन अच्छा रहा है. और दूसरा क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेटजी को लेके कि लाइक 100% इक्विटी और 90% इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस गोल्ड, दोनों में कौन बेटर रखता है अगर रिस्क सेम हो तो? थैंक यू. जी हाँ, मुझे भरोसा है कि अगर आप 10 साल से ज्यादा अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं
तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तुलना में एनपीएस का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें संभव है कि अब एनपीएस में 75% पैसा आपका इक्विटी में लग सकता है और उसका एक्सेस, उसका कंट्रोल भी आपके पास है, और ये सब कुछ ऑनलाइन आज के दिन संभव है। तो अगर आपके पास चॉइस है कि पैसा आपका ईपीएफ में लगे या एनपीएस में लगे और आपके पास 10 साल से या उससे ज्यादा समय है, तो जरूर लगाएं। बाकी आपका पैसा कैसे आपको कैसे डिवाइड करना चाहिए डिफरेंट एसेट्स में, ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको 100% इक्विटी में रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ नहीं है। और जब आपका पैसा थोड़ा इकट्ठा हो जाए तो जरूर 1/3 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में रहे, ताकि जब बाजार गिरे तो आपका पैसा ज्यादा ना गिरे। और जब आप रिटायरमेंट में आ जाए और 1/3 पैसा केवल इक्विटी में लगा रहे, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से डी-रिस्क कर पाएंगे, इंसुलेट कर पाएंगे कि बाजार में बहुत भारी गिरावट हो तब भी केवल 2/3 पैसा आपका नहीं गिरेगा, ये केवल 1/3 गिरेगा। तो ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग एलोकेशन होना चाहिए। और सोने के बारे में मुझे लगता है कि गोल्ड आपका एलोकेशन नहीं होना चाहिए, ये एक फिक्स्ड अमाउंट का एक होना चाहिए जो कि आपके लिए सिर्फ इंश्योरेंस है। और खासकर सोना तब उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है जब बाकी सब बाजारों में के बारे में बड़ी आशंका होती है। भारी अनिश्चितता में गोल्ड अच्छा करता है, तो उस नजरिए से एक आपके लिए इंश्योरेंस हो सकता है। ये डिफाइंड पैसे का एलोकेशन रखिए, न कि परसेंटेज टर्म्स में। और इक्विटी और डेट का एलोकेशन जैसा मैंने बताया कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग करना चाहिए। आइए अब चलिए पुणे, जहां से वेंकट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेंकट जी, समय कम है, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। सर से पूछना था कि मेरा 2 सवाल है। एक तो जो एएमसी है, म्यूचुअल फंड के एएमसी है, उनका भी स्टॉक लिस्ट हुआ है, एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? पर्टिकुलर एएमसी को कोई एक पर्टिकुलर स्कीम को देख के, म्यूचुअल फंड के स्कीम को देख के इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा? वो कौन सा बेटर रहेगा? आपसे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है एएमसी का, या कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम उसका उसी एएमसी या कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम को इन्वेस्ट करना है? और दूसरी सवाल जो है, जो मल्टी कैप के लिए जो सेबी का ऑर्डर आया था कि सभी में 25% इन्वेस्ट करना चाहिए सभी कैप्स में, तो वो अभी कुछ हाल उसका निकला है क्या? कुछ हाल निकला है क्या? जी हाँ। अब दूसरा जो प्रश्न है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ज्यादा लोगों के लिए काफी लोग जानने के बारे में उत्सुक होंगे, क्योंकि परसों ही ये सेबी का नया सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि अब म्यूचुअल फंड कंपनियां एक नया कैटेगरी का फंड, जिसको फ्लेक्सी कैप कहा जाएगा, जिसमें कि कितना भी प्रतिशत किसी भी तरह के स्टॉक्स में लगा सकती है। जी, ये संभव हो पाया। तो पहले वाली मल्टी कैप जिन फंड्स को धीरेन्द्र जी, समय समाप्त हो रहा है सर, मैं अफ्रेड हमें प्रोग्राम को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए आज के कार्यक्रम में, और हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Narendra Modi announces the change of name of Shipping Ministry to Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Demonetization has helped reduce black money, says the Prime Minister, and government has procured nearly 250 lakh metric tons of paddy in the current Kharif season. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.